थोड़ा स्लो कर देना टीवी. Hello everyone, you're watching Cricket Next. I am Suramya Kaushik. It's the big match day where old foes have come against each other. It's Australia versus South Africa in Lucknow. Australia won the toss and they have opted to bowl first. Now, how do we see this decision? Let's hear it out from K. Srinivas Rao and Dharmendra Singh. Srini, none of the captains, neither Bavuma nor Cummins, are very sure of this pitch. They said after the toss that they don't know what to do, but okay, we'll go with the whatever happens here on this pitch. How do you read the pitch, and how do you read this decision by Pat Cummins to field first? So I think there's no World Cup match that has happened at this venue. Until now, it's the first game. It's a big ticket game. The Australia have a fair idea of what South Africa as a squad are in terms of the strengths and the weaknesses they carry. And the only homework that could have been done coming into the game is probably, kind of taking an idea of what this pitch has been like or what the conditions have been like here during IPL, right? And what we understand or what we've learned from IPL is that more or less there have been low scoring games, right? I mean, that's how at least we've heard and seen about Lucknow. So I think that's where the lack of anybody not being sure, I think, stems from. In fact, now that I'm saying this, it just comes to mind that probably that is the reason why Marcus Stoinis, fit of course, fit and back, is come in place of Cameron Green. I think the one reason that makes him a favorite is the venue, because this is his IPL home ground. So Yeah, perhaps that's the reason, because he must have been here on this ground and he has played a few matches there. But Dharmendra, let's first talk about both the teams. Okay, Australia are coming after that big defeat from Team India that happened in Chennai, and South Africa, they crossed that 400 mark in Delhi, so they are brimming with confidence. They know their players, so I believe this is going to be a very, very important match for the Australian team because they have a lot to prove on their side. South Africa must be in their own shoes. They must be just filling to just go with that momentum that they gained in Delhi, isn't it? एक्चुअली इफ यू लाइक अगर हम इनके फॉर्म की बात करेंगे तो अपर हैंड अभी साउथ अफ्रीका के पास है. इसके वो 400 प्लस स्कोर बना चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया अभी 200 का भी वो नहीं कर पाए इंडिया के खिलाफ जो. और उससे ज़्यादा सुरम्या ऑस्ट्रेलिया का जो कंसर्न होगा, ये जो लखनऊ का जो ट्रैक है ये ऑब्वियसली स्लो है और यहाँ स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी. अगर आपको याद हो लास्ट मैच जो चेन्नई में हुआ तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों स्पिनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की. तो अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चैलेंज ये भी है कि उनके जो देखिए मैक्सवेल भी अब रेगुलर स्पिनर में इनको काउंट किया जाता है और जंपा जिस तरह के उनका परफॉर्मेंस रहा है. सो अभी इनको आगे के मैच सिर्फ इस मैच के लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए देखिए उनको पता है कि इस वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ना है और आगे अच्छे परफॉर्मेंस करना है तो स्पिनर्स का उनको रिदम में आना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पर इनके लिए देखना शायद मुझे लगता है इसलिए चूंकि विकेट को लेकर बहुत श्योर नहीं है तो ये पहले इन्होंने देखना चाह रहे हैं अपनी बॉलर्स को अपने किस तरह से ये आजमाएंगे. और जैसे श्री ने कहा कि स्टोइनिस इज एक्चुअली मेरे हिसाब से वो हमेशा फर्स्ट चॉइस ही उनके रहे हैं. और यहाँ पर इस विकेट पे सिर्फ आईपीएल खेलने की वजह से भी जो स्टोइनिस का जो बॉलिंग का स्टाइल है जिस तरह के वो मीडियम पेस है वो, तो मुझे लगे काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग में उनकी काफ़ी इफेक्टिव रहने की मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे इस विकेट पे. Well, we'll get to know very quickly whether he'll be effective or not because Australia have decided to field first. So we'll see their bowlers first in today's match. लेकिन श्रीनी यहाँ पर दोनों ही टीम्स ने कुछ चेंजेस करे हैं. ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे, मार्कस स्टोइनिस has come in. उसके साथ साथ Josh Inglis as well. He has made his place in this playing 11 in place of Alex Carey. And if I talk about the South African side, then Tabriz Shamsi has been brought up in this team. Now, how do you see these changes, especially keeping in mind this Lucknow pitch? So as I said, I mean, I don't think Australia understands or is even trying to understand this pitch. They're very clear that they are going with their finest attack. Okay, Yeah. and they expect them to like kind of while they go into the game,
kind of I at least see when a team in a white ball format, kind of wins a toss and elects to field first so confidently, then the only thing clearly coming out of it is that they're not confident about what they're doing. So or about what the conditions are going to be. Because if you're really confident, then kind of you bat first. Especially like where pitches tend to be high scoring tracks. So I think they are very unsure. That's supposed to. I think that's one of the reasons why they elected to bowl first. Going into the game gradually, they kind of take a call. Remember, they're running into a massive South African batting line. So I'm trying to understand, like as Dharmendra said. I mean, you talk about a team that's like kind of plundered 400 plus, and I'm sorry to use the word, but some of the guys in that squad are mad. The way they can Yeah. just go about it. Yeah, 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 just raise the bar, like kind of. So from that perspective, I would like to think that Aussies would rather kind of put them out there and kind of get them kind of look at chasing a target. Yeah. I mean, yeah, I can't think of anything. They're just not sure. They're just not sure about what kind of a track to expect, and they're only going by kind of what they've seen in IPL, which Yeah, is and chasing. actually, yeah, and this is the first World Cup game here in Lucknow, and both the captains were completely unsure. They said it quite clearly after the toss, and Srini rightly mentioned that Australia, it seems that they are going by their best playing 11, and they want to win this match by that way only, because अभी उन्हें पता नहीं है किस तरह से पिच बिहेव करेगा, किस तरीके से कंडीशंस होंगी. So इसीलिए the best way out there to face South Africa is to put your best playing 11 there. लेकिन धर्मेंद्र, जब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, गेस श्रीनी. No, no. You had also asked me about English coming back Yeah, into the Josh squad. Inglis. Yeah, yeah. I Honestly, I believe mean, we'll. like, yeah. Sorry, you saying something? Yeah. We'll come Yeah, back. I believe that Australia must have done changes in terms of what playing 11 can suit against South Africa, because Alex Carey didn't work well in the first match against India, and if you see Alex Carey's record here in India, he hasn't done great. So I believe that might be the Um, reason, one of the reasons. from what I'm seeing or what I'm hearing of English, I will go with him in any white ball across Yeah, formats. I'm going to go with the guy. Like yeah, he's like he has that power to hit, and that I think in the middle order is always an asset. It's a proper hard yeah. hitting batter, and I think that's a great asset to have. So I don't think there's any science behind it. Like it's a clear choice. Yes, yes. And I believe that this change must work for Australia in today's match. Now, Dharmendra, I was talking about these two teams. We saw their series, that five-match series where South Africa completely turned the result after Australia won those two matches. और उसके बाद वो तीन मैचेस में कैसे बाउंस बैक किया था और वो पूरी सीरीज जीते, एवरीबडी नोज. तो यहाँ पर भी कुछ तो इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा. सो आर वी एक्सपेक्टिंग दैट लास्ट बॉल थ्रिलर एंड दोज एक्साइटिंग काइंड ऑफ matchups there in this whole game? So Ramya, as for me, it's a do or die match for Australia. अगर ये लूज करते हैं तो इनके लिए वर्ल्ड कप पे बहुत मुश्किल होगा सेमीफाइनल के रेस में बनना. याद कीजिए, अगर इंडिया से हारे, साउथ अफ्रीका से हार के, याद रखें इनके अभी आगे मैचेस, अभी इनके बड़े मैचेस बचे हुए हैं. तो बिल्कुल. यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं मानता हूँ, सिड ने भी कहा कि बेस्ट 11 के साथ उतरना पड़ेगा, इनके पास ऑप्शन है कहाँ. सो डू और डाई मैचेस इनके लिए है. और देखिए, विकेट के बारे में जो हमारे बंसल साहब, हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इस रिलेट सरफेस, पैची ग्रास ऑन द सरफेस, द न्यू बॉल विल हिट एंड किस द सरफेस, रेड सॉइल फ्रॉम मुंबई. मेरे ख्याल से जो इंडिया का जो T20 मैच हुआ था, उसमें काफी क्रिटिसिज्म यहाँ के पिच को लेकर हुआ था. तो शायद यहाँ पर उसको वो करने की True. कोशिश की गई, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है. तो हो सकता है कि जो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्लो पिच हो गया, स्पिन ट्रैक हो गया, तो ऐसा ना हो. जिस तरह की ये, अगर इस इन्फॉर्मेशन को अगर हम माने, तो मे बी चीजें मतलब थोड़ा बेटर. इसलिए ऑस्ट्रेलिया शायद, तो ऑस्ट्रेलिया ने चांस लेना इसमें बेटर वो नहीं समझा, चेज करना चाहेंगे, क्योंकि जो भी इनको मिलेगा, क्योंकि इनको जीतना, हर हाल में जीतना है. और ये सिचुएशन साउथ अफ्रीका के लिए नहीं है, और इन पर डबल प्रेशर है. इंडिया से हार कर गया है, जैसा आपने बताया कि वनडे सीरीज भी साउथ अफ्रीका से हार गए थे ये. तो इनके पास डबल प्रेशर है, मतलब किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच आसान नहीं रहने वाला है. इट्स अ वेरी टफ गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया.
Absolutely, because if you see their series against South Africa, they lost that series, then they lost the ODI series against India, then they lost the first match against India. So now you really need to come back and bounce back, especially in this tournament, World Cup 2023. I have with me Chetan Narula. Chetan, welcome to the live show. We were just talking about the pitch out there in Lucknow and how to read Australia's decision of fielding first. What are your thoughts on that? No, I think it's a great decision. Am I audible? Yeah, you are. Yeah. Yeah, no, I think it's a great decision. It's an absolutely great decision because एक तो पहली बात आपको पता नहीं है कि लखनऊ की पिच कैसे बिहेव करेगी. There's a bit of grass covering, or traditionally this is a spin-friendly wicket. It has been delayed after the IPL, so you don't really know how it's going to behave. So उसपे you would want to put the opposition into bat. And secondly, and I think ये जो एक theme बनता जा रहा है इस tournament में कि अंडर लाइट्स अगर टर्निंग विकेट है तो वो स्पिन का एडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे हमने चेन्नई में देखा. ऑब्वियसली वहां पे इंडिया ने पूरी इनिंग्स नहीं खेली, तो अगर वो 300 रन बने होते तो क्या स्पिन का इफेक्ट ज्यादा रहता. प्रेशर प्रेशर डज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट अगेन अंडर लाइट्स थोड़ा स्पिन का इफेक्ट थोड़ा कम रहता है. दूसरी चीज, लखनऊ में, ये मैं पूरी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बोलता आ रहा हूं, लखनऊ इज गोइंग टू हैव द मोस्ट ड्यू इन दिस टूर्नामेंट. मोस्ट ड्यू, तो वो आज देखने को मिल सकता है. और ड्यू का इंपैक्ट ये रहता है कि पिच थोड़ा सा बेटर हो जाता है बैटिंग करने के लिए. इनिशियल ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी मूवमेंट मिलेगी, लेकिन जैसा हमने चेन्नई में देखा था, लेकिन द पिच इजी टू बैट ऑन. सो आई थिंक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट इट्स अ गुड टॉस टू विन एंड फील्ड फर्स्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया. उनके जो बैट्समैन हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, सो I would not want their batting to go out and bat first और फिर 200 पे all out हो जाए. I would not want that. I don't think Pat Cummins wants that. And they've made a couple of changes which seem to be good changes. Alex Carey तो अपनी जान बचाने के लिए स्पिन नहीं खेल सकते, तो जॉश इंग्लिश को लाना जरूरी था. And Marcus Stoinis is a We're better just talking batsman about that. in these Yeah. conditions. Yeah, absolutely. I mean, मैंने बहुत सारे बैट्समैन देखे हैं जो रेड बॉल के अगेंस्ट ऑन रैंक टर्नर स्ट्रगल करते हैं. और एडम गिलक्रिस्ट और एलेक्स कैरी का कोई कंपैरिजन हो नहीं. एलेक्स कैरी बिल्कुल भी शर्त ना लगाएं अपनी लाइफ में कि मैं इंडिया में बैटिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं. मतलब जो वाइट बॉल पे नहीं खेल सकता, आई थिंक मैं और श्रीनी अभी यही बात कह रहे थे, और हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि एलेक्स कैरी का आप कोई भी रिकॉर्ड उठा लीजिए इंडिया में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो आज तो ऑस्ट्रेलियन सोचा होगा प्लीज आप तो बाहर बैठिए, हम इंग्लिश को लेकर आते हैं. लेकिन श्रीनी, अगर हम साउथ अफ्रीका टीम को देखें तो तबरेज शमसी भी एक वेल प्लान डिसीजन है. तेम्बा बबूमा ने कहा कि बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एंड बिकॉज ऑफ द पिच उनको इस टीम में लाया गया है. एंड ही हैज गॉट अ डिसेंट रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सो वी वांट अनदर गुड one good player in the team, so that I believe that they are thinking to cross that 450 now. चेतन की फेवरेट बॉलर है तबरेज शमशी. पता है कितने बड़े थ्रेट है वो. तो वो आ गया स्क्वाड में. तो मुझे भी सरप्राइज हुई. He's caught me by surprise. मेरे को सोचना पड़ रहा है seriously. So South Africa, I think for the conditions that are available, this is the best possible squad. I mean, they've gone in with Maharaj and Chamsi, and however unsure they are, it's a classic mix of pace and spin that they have at their disposal. See, now this is a squad of kind of, this is coming into the series also. Both these teams have the chest beating that has happened on the batting front. Okay, I completely agree with what Dharmendra said, that it's a crucial game for Australia, and I completely understand, because you screw this up for another time, then you run into England and New Zealand. Both these teams have effectively always kind of uh, been a pain for them historically. So they would want to kind of gain some kind of confidence coming out of this match. And so the chess beating that has happened in coming into the series has been kind of about putting runs on the board, right? So if I'm going to look at it from that angle, I think this is a very good, as Chetan said, this is a very good toss for Australia to actually win and kind of decide Win, not yeah. to bat fast.
Yeah, because you're Mm. not putting yourself under any kind of an unsure position. You've Mm. taken the safe call of trying to see, let's see what the opposition does, and then take a call. And then I don't know, I wasn't sure about the due factor. Chetan says there's going to be a lot of due, and if that's the case, then all the better to kind of take a call on batting second. And I think great decision out there. Also, Yeah, this and Aussie the team, Australian this side of, South yeah, I mean, this South African batsman, this lineup, classic. Like right now, among all the World Cup teams, everyone, any middle order. If I truly have to identify that one mad guy, like who can just kind of come out and single-handedly change the course of almost anything under the lights, it's this fellow. So, chasing, I would rather not have this guy batting second. I'd rather have him go out there first, finish whatever he has to offer, and then look at a target and probably follow it. So, yeah, I mean, all in all, a great decision. yeah, I was about to say the same because Klaassen has been classic, when it comes to chasing, and he's one of the finest batters here in this World Cup. Jason Malcolm is asking Nathan Ellis should have been in the squad in place of Abbott. What's your take, Dharmendra? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लगता, जैसे अभी हम सब बातें ही कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बेस्ट 11 चुने हैं कि उनको मालूम है कि उनको मैच जीतना है। सो ये देखिए क्या होता है, कोई किसी के अलग-अलग चॉइसेस होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी एक प्लेयर को लेके हम सब एग्री करते हैं कि क्लासन का कोई जवाब नहीं है, इज़ अ वेरी रियली क्लासिक। और मुझे भी जब क्लासन का नाम आया तो मुझे एकदम से याद आया जब इंडिया साउथ अफ्रीका खेलने गई थी, जब विराट कोहली कैप्टन थे, उस सीरीज़ में क्या इन्होंने मारा था। मतलब अचानक ऐसा आके लगा कि साउथ अफ्रीका टीम में कुछ कोई ऐसा आ गया क्लास, मतलब क्या मतलब। तो देखिए ये जो है ना, हम प्लेइंग 11 को लेके हमेशा हमारा वो होता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को पता है कि उनको बेस्ट 11 उनके लिए क्या है। और हम सब जैसा दिख रहा है, जैसे टीम दिख रही है, बेस्ट 11 के साथ उतरे हैं, क्योंकि उनको मैच हर हाल में जीतना है। यहाँ से हारने का कोई मतलब है, हारने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैं तो समझता हूँ अगर यहाँ हारे तो पैकअप, यहाँ से फिर वापसी करना मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का टूर्नामेंट है और जिस तरह के बाकी टीमें फॉर्म में हैं, यहाँ से फिर 2 मैच हारने के बाद आप वापसी नहीं कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का आप रिसेंट रिकॉर्ड देखिए, लास्ट 7 ओडीआई सिर्फ 1 जीत है। तो मतलब अपने आप में इनके लिए हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। रिसेंट फॉर्म इज़ वेरी पुअर। सो मुझे नहीं लगता कि टीम बिल्कुल बैलेंस है। अब कंडीशंस जैसा उन्होंने टॉस जीतने के बाद कमिंस ने बोला भी कि यहाँ पर इस 20 मॉइस्चर, सो वो अपना वो पहले उन्होंने बैटिंग टॉस भी अच्छा इन्होंने जीता है। तो अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में सब कुछ दिख रहा है, मतलब टॉस जीता उन्होंने, बाद में अगर ड्यू फैक्टर अगर काम करेगा तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया तो ये होप करेगा कि ये मैच किसी भी तरह से इसको जीतना है, फिर आगे का वो देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा मैच है ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। जब ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में आ रही थी, एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड आर वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। एंड हमने जिस तरह से देखा कि ऑस्ट्रेलिया हारी इंडिया के खिलाफ उस मैच में, उसके बाद ये मैच बहुत बड़ा बन गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। साउथ अफ्रीका ने ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी तरह से जीता था श्रीलंका के अगेंस्ट, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल मैच फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम। नाउ चेतन, सब लोग यहाँ पर बात कर रहे थे मार्कस टॉयनिस की कि वो जानते भी होंगे इन कंडीशंस को, वो खेलते हैं, बट वी हैव मिस्ड द वेरी 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 क्रूशियल नेम, क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक का तो ये आप एक तरीके से समझिए कि होम ग्राउंड है। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी होंगी अपनी टीम को जब वो आईपीएल खेले। So I believe Quinton de Kock's presence in the South African lineup is also a very, very big factor for their team. It is undoubtedly. I think दो खिलाड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आज वो हैं क्विंटन डिकॉक और मार्कस टॉयनिस। उनको, इन दोनों खिलाड़ियों को के लिए ये होम ग्राउंड है। दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पे Yeah. एक्सपीरियंस है कंडीशंस का। हालांकि पिच थोड़ी डिफरेंट हो गई है, सो हमें देखो पहले 15 ओवर में हमें पता चल जाएगा हाउ द पिच इज गोइंग टू बिहेव। If we see Glenn Maxwell bowling in the 8th over again within the first 10 overs, we know where the pitch is going. So I think Yeah. both players will have told their teams. अभी दोनों टीमें पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे हैं। South Africa played on Saturday and then came to Lucknow. Australia played on Sunday and then came to Lucknow. So they've had a good 2-3 day preparation. इनके सभी जर्नलिस्ट ने अच्छे से कबाब खाए हैं और उनकी फोटोज डाली हैं सोशल मीडिया पे। तो these teams have been in Lucknow for 2-3 days. Yeah. I think they know how the conditions are going to play. It's just the pitch, क्योंकि new pitch, new surface, new outfield, everything new regarding that.
वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है. So I think that makes for a very interesting game today. अभी Yes. तक हमें कितने घमासान गेम्स देखने को मिले. अगर हम टॉप टीम्स की बात करें, जो टॉप 4 प्री टूर्नामेंट सेमीफाइनल फेवरेट्स हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कुछ लोगों के लिए न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इन तीनों में से एक रहता है. हमने अभी तक इंग्लैंड न्यूजीलैंड देखा, हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखा, and I think this is the third biggest game in the tournament so far, and obviously the fourth one, will come after this. But I think from a semi-final perspective, आप अगर points table को देख लो, run rate को देख लो, साउथ अफ्रीका के पास points भी हैं, run rate भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास ना points है ना run rate है. So from these Yeah. different angles, अगर आप एक के बाद ये context add करते जाएं, I think this is a huge game. Not only from the fact that it's Australia versus South Africa, it's a huge game from a lot of different scenarios. England lost the first game, लेकिन उन्होंने second game जीत के, और वो बांग्लादेश के अगेंस्ट था, तो उनके लिए थोड़ा सा easy रहा. सौरभ में आप थी वहां पे, तो वो थोड़ा उनके लिए easy रहा. They got those 2 points. They rectified the poor start to the tournament, और उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की और रन रेट अपना थोड़ा सा बचा लिया. रन रेट इंग्लैंड का ऊपर आ गया है. But Australia, it's a double whammy for them because they're playing, first of all, a tough side, a side which has 3 centurions in the last game, a side that scored 400 runs, and they're playing on a pitch which is unpredictable at the moment. So, from that perspective, I think Australia ke liye it's a double whammy. It's a very tough game, but at the same time, it's also a very, very important game. Just Ravinder ne kaha tha, jab मैंने join किया, it's a must-win game for Australia today, and I think it's very, very early. Very early, and इस गेम के बहुत सारे सेमीफाइनल इंप्लीकेशंस होने वाले हैं. बहुत सारे सेमीफाइनल इंप्लीकेशंस होने वाले हैं इस गेम के. This is just match 10 of the World Cup. Yeah, and, Yes, and South Africa are doubly dangerous because this is still early part of the tournament. I mean, they are not likely to choke for another 6 matches. So Yeah, that makes and them stronger. fingers crossed, Srini, fingers crossed. Who knows? But here, at least in this match, everyone's hoping that if South Africa will be winning it up, then they should not choke. I mean, that's the least thing that would anyone will ever That's early. want. Yeah, actually, Chetan was talking about the England team. Chetan, while I was there, there was this one keyword that all the players of the England team were talking about. That was the hunger to win, hunger to reach the business end of the tournament. They said, "We don't know, we don't care who's the opposition, we don't care what's the pitch, we don't care what are the conditions. We know that we have the hunger, and we will be there to play for that hunger." So I believe that hunger is very, very important for any team, be it England, be it Australia. You are one of the best teams here in the World Cup, and that hunger is the only thing that will help you to win matches regardless of the conditions. No, absolutely. Am I audible? Yeah, loud and clear. Yeah. Am I audible? Yeah, okay. No, you talked about hunger. I think that's a very, very important aspect, and it's a very important point. और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत रेलेवेंट है. सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और उसका एक रीजन है. This Australian team is the most successful ODI side in the world. I'm talking about Australia in general. I'm not talking about this team in particular. They are 5-time ODI World Cup champions. ऐसी कोई टीम नहीं है. 5 times. सेकंड कौन है? 2. वेस्ट इंडीज के 2, इंडिया के 2. कोई किसी ने आज तक 3 वर्ल्ड कप भी नहीं जीते हैं. Yeah. 5 times is huge. और वो 5 times क्यों है? Because Australian cricket is hungry for victory. उन्होंने अपना एक लेगेसी बनाया हुआ है. वर्ल्ड कप is a very, is a tournament of pride for them. And this team also needs to show that hunger. और वो hunger मुझे इस ऑस्ट्रेलियन टीम में नजर अभी तक नहीं आई है. The way they've been batting, the way they've been carrying themselves. प्ले 7 ODI में से 1 ODI जीता है अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने, which is really worrisome. और उस 7 में से 3 जो है वो साउथ अफ्रीका से हारे हैं, और 4 जो है वो 4 में से 3 जो है इंडिया में हारे. So you can't really say this Australian team is on a high. ये लोग डाउन कर्व पे हैं. और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलियन टीम का जब अपस्विंग आता है ना, डाउन कर्व के बाद अपस्विंग, तो दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर पाथ. सो अभी वो हंगर हमें नहीं दिख रही है. क्या पता आज वो जीत के उनके लिए वो टर्निंग पॉइंट आ जाए, एंड देयर हंगर, they start feeling hungry. That would be very dangerous for the remaining sides in the tournament. So like I said,
is going to be a very, very important game from the tournament perspective. Australia has to show their hunger today. South Africa has to prove their semi-final credentials. Absolutely. So it's all about consistency for the South African team and hunger for the Australian team. Let's see what happens in the match today. Also, Themba Bavuma really needs to perform well in this match. The others have already done. It's a big match for the South African captain. Let's see what happens. Enjoy the match. Thank you so much, gentlemen, for joining with me. And thank you so much, everyone, for watching our live show.